Hello everyone, this is Divesh Goyal, practicing company secretary in Delhi. So now we are preparing a series of video on DPT-3. I am trying to cover all the different type of transaction of the DPT-3 in this video. So my first video in this series, I am going to start on a topic loan from the director and the relative of director. ये बहुत कॉमन है डायरेक्टर से लोन लेना, रिलेटिव से लोन लेना, बट देयर आर द सर्टेन प्रोविजन, देयर आर द सर्टेन कंडीशन विच एवरी कंपनी हैव टू फॉलो, विच एवरी ऑडिटर हैव टू चेक. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इन डिटेल. नंबर 1, एक कंपनी डायरेक्टर से लोन ले सकती है और डायरेक्टर के रिलेटिव से भी लोन ले सकती है. दिस कंडीशन इज मेंशन अंडर द डेफिनेशन ऑफ द डिपॉजिट इन डिपॉजिट रूल्स अंडर रूल 2 क्लोज C सब क्लोज 8. So in the subclause 8, it is specifically mentioned company can take loan from the director and the relative of the director. But there is one condition. The condition is that whenever a company will take loan from the director or the relative of the director, they will take a declaration from the director that director is giving or relative is giving this fund from their own fund. So director cannot give the money from the borrowing fund to the company. One more thing, many times this question came to me from the professional. If a company have taken several time in a year a loan from the director, whether every time company required to take declaration from the director, then my answer will be yes. Every time company should take declaration from the director, because every time director have to tell yes, this is my own fund. And as an auditor, I just want to suggest one thing. As an auditor, please always keep a copy of the declaration in your audit document so that in future you can save yourself as well as your client. Then the next thing, whenever a company take loan from the relative of the director or the director, company have to give a proper disclosure of the same in the director report also. We have seen that many companies are not giving the declaration in the director report, but you have to give a proper note in the director report. Now what is the procedure for loan from the director? Company have to hold a board meeting, pass a board resolution in board meeting, and company have to take a declaration from the director. This is the process that a company have to follow. Now the question is arise, as we said कि company can take loan from the relative of the director who are covered under the relative. So as per Companies Act, spouse, member of HUF, father, mother, brother, sister, son, daughter, son's wife and daughter husband, these are the only relatives which cover under the definition. Because जब अगर हम इनकम टैक्स के रिलेटिव की डेफिनेशन की बात करते हैं वो बहुत बड़ी है, बट कंपनीज एक्ट में रिलेटिव की डेफिनेशन बहुत स्मॉल डेफिनेशन है. इवन HUF को भी रिलेटिव में कवर नहीं किया. अगर एक कंपनी को HUF से लोन लेना होता है तो HUF इज नॉट कवर अंडर द डेफिनेशन ऑफ द रिलेटिव, बट द मेंबर ऑफ द HUF इज कवर अंडर द डेफिनेशन ऑफ द रिलेटिव. सो नाउ क्वेश्चन अराइज कि जब एक कंपनी DPT-3 फॉर्म फाइल करेगी, अगर उसने एक डायरेक्टर से या रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर से लोन लिया तो DPT-3 में कहां शो करना है? तो DPT-3 में आपको शो करना है ये पर्टिकुलर नोट कंसीडर एज डिपॉजिट, बिकॉज दिस इज नॉट डिपॉजिट, दिस इज लोन. सो पर्टिकुलर नोट कंसीडर डिपॉजिट पे आपको क्लिक करना पड़ेगा. फिर जो एक लिस्ट ओपन होगी उसमें 8 नंबर पॉइंट पे आपको डायरेक्टर्स के लोन को और रिलेटिव के लोन को मेंशन करना पड़ेगा. लाइक ओपनिंग लोन कितना था, एडिशन कितना है, डिलीशन कितना है, देन क्लोजिंग कितना और उनकी एजिंग्स कितनी है. एंड वन मोर थिंग, ऑलवेज दिस क्वेश्चन केम, जो भी फिगर हमें DPT-3 में मेंशन करनी है, क्या वो ऑडिटेड फिगर होनी चाहिए या अनऑडिटेड फिगर होनी चाहिए? अब DPT-3 की बात करते हैं. DPT-3 हम फाइल करते हैं एज पर रूल 16 और 16A ऑफ द डिपॉजिट रूल. एज पर दैट रूल DPT-3 में जो भी फिगर मेंशन होगा वो ऑडिटेड फिगर होगा. सो DPT-3 में जो फिगर है और आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो फिगर आएगा वो कभी भी वेरी नहीं करना चाहिए. दैट शुड बी द सेम फिगर. So I tried in this video to cover everything about the loan from director and loan from the relative of director. Still आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, प्लीज मेंशन इन द चैट बॉक्स. वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन and we will prepare more videos on DPT-3 in next 7 to 10 days so that you can get a complete knowledge about the DPT-3. Thank you so much.